Well, good afternoon, boys and girls, ladies and gentlemen. मैं हूँ फिली ऑन विद अरविंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज संडे है और आज का दिन प्रिपरेशंस का दिन है। मैं आज प्रिपेयर करने वाला हूँ अपने आप को राइड के लिए। तो अपने आने वाला एक ऑल इंडिया राइड होने वाला है, और इट्स नॉट एन ऑल इंडिया राइड, एक्चुअली इट्स जस्ट अ राइड फ्रॉम कोचिन टू समवेयर इन नॉर्थ इंडिया। 3-4 डेस्टिनेशंस हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, उसी की प्लानिंग चल रही है। तो ये अपना वायटारा का क्लॉ बैग है जो पीछे लग जाएगी मेरे पिलियन सीट पे मेरे साथ। दिस टाइम आई डोंट हैव एनी पिलियन विथ मी, सो ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है। इसके ऊपर आप रेस्ट भी कर सकते हैं राइडिंग पोजीशन में। सोच रहा हूँ कि क्या मैं अपना नी पैड वगैरह लेके जाऊँ, हाइड्रेशन पैक, ग्लव्स वाउस, अपना टैंक बैग, एक्स्ट्रा बैगेज सब निकाल के आज पूरा दिन यही काम चल रहा था। पूरा घर का सफाया किया मैंने, एंड सफाया करने के बाद वहाँ पे इतना कचरा था, वो सारा कचरा हटा दिया। अभी एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है। अभी इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे और विल गेट इनटू द हेल्थी लाइफस्टाइल। मेरे बच्चे का बर्थडे था 3-4 दिन पहले, सो ही जस्ट टर्न 5 एंड दैट्स द अपडेट ऑफ माई लाइफ। और एक और चीज़ हुई है लाइफ में, मैंने अपने बेडरूम में एक ब्रांड न्यू एसी भी लगवा दी। वो बहुत ज़रूरी है, केरल में इतनी गर्मी है और गर्मी में होते हुए रात को सोया नहीं जाता। ये रूम भी बहुत ही गंदा हो रखा था क्योंकि इसको हम यूज़ नहीं कर रहे थे। इसमें एसी लगवाया, पूरी प्रिपरेशन चल रही है, जल्दी निकलते हैं। सभी सारे सामान लेना है मेरे को बाहर से, और एक्चुअली कुछ सामान मैंने कल ही ले लिया था। हम गए थे डेकाथलन में, तो मैंने डेकाथलन से लिया एक रेन गियर जो टॉप होता है और उसका एक बॉटम। ये काफ़ी अच्छा आता है, इसके नीचे जो एक कवर भी मिल जाता है बूट के लिए, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एक्स्ट्रा हेलमेट कवर आज निकल के आया। अगर मैं कुछ और सामान रखना चाहूँ तो हेलमेट्स का पुराना LS2 हेलमेट, इन सब का भी कवर्स निकल के आए हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है मेरे लिए ये सब। तो दिस इज़ ऑल्सो वन अनदर थिंग कि काफ़ी रेन गियर आपको सेपरेटली लेके रखना पड़ेगा। ये थोड़ा ब्लूइश कलर का है, तो इट्स गोइंग टू हेल्प मी रिमेन विजिबल इफ़ देयर इज़ एनी रेन ड्यूरिंग द नाइट टाइम आई एम राइडिंग। इसके अलावा और मैंने 2 एक्स्ट्रा टॉवल्स लिया है एंड आई हैव टेकन सम आर्म स्लीव्स एज वेल। आर्म स्लीव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पहुंचने के बाद कहीं घूमने चल रहे हो और धूप है आजकल, तो समर इज़ ऑन एंड हीट वेव warnings are also in place, so I think we'll have to be a little more extra prepared with our protection. ऑल इंडिया राइड है, तो आगे अभी मिलते हैं बाइक के ऊपर। थोड़ा सामान वामान लेने जाना है, आइटम्स परचेज़ करना है, आइटम प्रिपरेशंस क्या होनी है, सब एक साथ बताऊंगा मैं भी। फ्लैशबैक। चलो, घर से निकल चुके हैं, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने चलता हूँ एंड गाड़ी स्टार्ट करने के बाद लेट्स गो। गाड़ी हो गई है स्टार्ट एंड चलते हैं हम आज जाएंगे अभी टू डेकाथलन। वी हैव टू बाय सम आइटम्स फॉर आवर राइड, especially some rain gear and some such items, because पता नहीं if I reach certain place where there is raining, then I don't want to be stuck without a good rain gear. The existing one है जो मेरे पास, वो फट गई है पिछले रेनी सीजन के राइड्स के बाद, तो उसकी हालत ही बहुत बुरी है। So I thought now it's a good time to buy. The world know कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, where am I going. So guys, I am going to do an iron butt ride from Cochin, and फिलहाल का plan is to go till Patna, Bihar, and that is somewhere 2500 and some 90 or odd kilometers from where I am looking at, so nearly 2600 kilometers, and this feat needs to be achieved in 36 hours non-stop. So in our Indian condition it is going to be actually non-stop, there won't be much of rest. In American conditions, when you ride 36 hours, you can take a 4-5 hours break in a hotel, go to sleep and everything. But in our condition, I don't think it is so easy. And what makes it even more difficult is that it's a summer time here in India with a heat wave sign on. So there are a lot of preparations going on. I'm trying to prepare my body, this bike. So today we are going to focus a bit on the maintenance of this bike as well. Some fine points which will make sure that the bike is healthy till the time it reaches Patna, because at Patna I intend to do its servicing.
What are the preparations which I am doing? Well, the preparation which I am doing is preparing my body. 36 hours on this saddle is not an easy job, or any saddle for that matter is not an easy job. How comfortable you can make it. And what makes it even more tough or difficult is that the climate around you is not the best one should expect or one should crave for. And therefore 36 hours or 2500 kilometers non-stop, it is an ultimate endurance testing, not only for the rider but also for this bike. So those who think, those who doubt this bike is not the best around, is it a capable enough tourer, it's just a 500cc. The 500cc's have a lot of issues, so I'm going to put it on the road and then test it out myself and show it to the world. There couldn't have been any more tougher times to show it or prove its mettle. So if this vehicle survives 2500 kilometers in 36 hours, then I'm sure that people will start respecting the Benelli engines which are produced. So we'll have a pure testing of this bike, its engines, its parts, chain, everything would get purely tested in the real life conditions on the tarmac for which this motorcycle was built. So what after the ride from Patna, where do I go next? Well, that's where I have another option. Either I can go right towards northeast, explore a bit of northeast and show it to the world how northeast looks through my eyes, or else I can go north, explore Nepal, or else I can go a bit left, Varanasi, Ayodhya, Gorakhpur, do a kind of pilgrimage circuit, and thereafter keep pushing myself a little more westwards till Agra and all those places, and therefore see a bit more of the hinterland of India. As far as I'm concerned now, my primary plan is now to go to Nepal. I have never had a chance to explore Nepal. I had once entered Nepal when I was just having a motorcycle on rent from a place in Darjeeling, and went out motorcycling, and suddenly I stumbled upon an Indo-Nepal border crossing. That's when I thought, oh my god, I can actually jump across an international border, and did that. I didn't do much, I just went some 10 kilometers inside to see how Nepal looks. But then yeah, I entered another country. But now I really want to do it the proper way, go explore Kathmandu, Pokhara. I was thinking of doing the Mustang circuit, but the Mustang circuit may or may not turn out good because the road conditions are really bad. I am solo, most importantly, and if I get stuck in Nepal, it's not going to be easy to come back with this motorcycle. This is a very heavy motorcycle. It's going to cost me a bomb just to extract it from Nepal on this bike, and therefore I wouldn't stretch it more by going into Muktinath, because if you have an incident with your bike, especially if the alloy wheel breaks or something, it is going to be a tough job for me to negotiate those issues, so especially in a foreign country. So when I'm solo and I'm not that experienced in international riding, and therefore I decided I'm going to stick to the safe places. So I'm going to Kathmandu, Pokhara, and then I will join my plan Bravo, or the plan B of my trip, which was to do the UP circuit. So thereafter I'll enter via the Sanauli border to or something like that through Gorakhpur. From Gorakhpur I'll do an Ayodhya, then Varanasi, and maybe then I'll go on to towards Madhya Pradesh, or I don't know where. I am still thinking about those, and जैसे जैसे कुछ होगा वैसे वैसे प्लान बनती जाएगी. So I think now we are nearing Decathlon. तो डेकाथलन से कुछ रेन गियर लेना है, कुछ आइटम्स लेना है. स्लीव का सोच रखा है मैंने, क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग इन द हॉट सन इन द outer world, you better be having some UV protection. So sleeves are really important. It can even absorb your sweat. So that's the Decathlon. This is the Decathlon in Vaitla, and वहीं आगे है बेनली का शोरूम. ठीक है, दैट्स द बेनली शोरूम. सो I think we just now go into Decathlon. Decathlon थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है. जल्दी से गाड़ी पार्क करता हूँ और फिर आगे की बातें करते हैं अंदर जाके. So preparations are on for all India ride, and I'm in Decathlon and I'm going to buy some items. Need to buy some rain gear, some protective gears, some hats and so on. So आया हूँ आज मैं Decathlon में, and we'll have to have a look what are the items. I'm focused on the cycling section, which gives me a lot of such options.
So once everything is bought, I'm just going to come off and then I'll let you all know what did I buy. चलो हो गया है चेन टाइटनिंग. एक्चुअली मैं भूल गया था वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए. आई वाज प्लानिंग टू डू सम वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे चेन टाइटनिंग करते हैं वगैरह, लेकिन उस टाइम जितने भी टेक्नीशियंस थे उनके साथ मैं बैठ गया था और बातें करना शुरू कर दिया था मैंने, तो वो भी मेरा एक नुकसान हो गया. चलो नॉट विस्टैंडिंग, अभी हम जाएंगे स्टिकरिंग करने के लिए. मुझे थोड़ा सा गाड़ी के ऊपर स्टिकरिंग वर्क करवाना है. सो कमिंग फ्रॉम द कलूर कडवंतर रोड इज़ टू अ शॉप कॉल्ड वर्नम ऑटोमोटिव. वर्नम ऑटोमोटिव में गॉट माई बाइक अपनी नंदी जी खड़ी हैं वहाँ पे, एंड उनका आज स्टिकरिंग वर्क करेंगे. यूट्यूब वाला नाम लगा देंगे इसके ऊपर. टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारा प्रिपरेटिव वर्क है. ऑल इंडिया राइड के पहले शुरुआत हुई है. I thought sticker is very important because it will help me get some identity out to the world when I am out on all India ride. Maybe some subscribers will come along too. Who knows? So we just go into the shop and see what's happening now. So right now the sticker designing is going on my channel. Before I head on to the long all India drive, it is very important that गाड़ी पे sticker हो. Because wherever I go and stop, people are asking me which is my channel. They don't even ask my name. So चैनल का नाम लगा देता हूँ बाइक के ऊपर. उसके बाद देखा जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो, नहीं तो हटा देंगे इसको. सब भैया जी लगे हुए हैं. वेरी स्मार्ट गाइड. ആർക്കറിയാം ഇത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കടയിൽ കുറേ കൊച്ചിയിലെ ആൾക്കാർ വന്നാൽ കുട്ടിയേക്കാം. ചേച്ചിയുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞേക്കാം. ആടാ अभी रेड कलर की पेपर की प्रिंटिंग. सो नाउ विल बी सीइंग द प्रिंटिंग ऑफ दिस इन द रेड कलर. इट्स नाइस लुकिंग मशीन. हमारी के लिए सीड़ा वंडी वंडी പിന്നെ അത്ര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇട്ട് അടിക്കുന്നു. കൊടുത്തോട്ടെ. ആ ആ तो दैट्स इट. पीछे वाला तो लग गया, बढ़िया लग रहा है. फिलियन के लिए काफ़ी बड़ी भी है. एकदम दूर से कितना दिख रहा है. पीछे से पढ़ने वाले को पढ़ा जाया जा सकता है ना. आई थिंक अ गाय एट अराउंड 5-6 feet और 10 feet behind the bike can read it. सो फ्रंट साइड का भी ख़त्म हो गया. सो यू कैन सी सब कुछ ही वाइटिश है. गाड़ी भी वाइट है और नामकरण भी वाइटिश फॉन्ट में. लेट्स सी आगे जाके देखते हैं अभी कैसे दिखेगा ये सब. पेमेंट भी अभी हो चुकी है. नाउ आई विल टेक लीव. लुकिंग ओके. आई थिंक पास आएगा कोई पूछेगा तो दिखाने लायक एक स्टिकर तो होना चाहिए. चलो जल्दी से रवाना होते हैं, बहुत काम आज के दिन. सो अभी यही हो रहा है कि जो इनर स्प्रॉकेट है, सो वी हैव रिमूव द इनर स्प्रॉकेट कवर. आई वेंट टू अ शॉप, गॉट द इनर स्प्रॉकेट कवर क्लीन. इनर स्प्रॉकेट क्लीन, क्योंकि इनर स्प्रॉकेट में ना बहुत मिट्टी जमी रहती है, क्रीज जम जाती है. हाथों में देखिए क्या हालत हो रखी है. तो मैं क्लीन कर करके मेरे हालत का ही ऐसा हालत है. तो सोचिए कितना गंदगी होगी अंदर. भैया का हाथ देखिए. तो अभी स्प्रॉकेट को वापस लगाया जा रहा है. तो कभी भी किसी लॉन्ग राइड जाने से पहले वो गेट योर इनर स्प्रॉकेट क्लीन एटलीस्ट वंस. लोकल मैकेनिक से ही सही, कोई भी सुपर बाइक हो, कुछ भी बाइक हो, गो गेट इट क्लीनड फ्रॉम local mechanic and washing center, because if the inner sprocket is clean, it is going to keep your sprocket life a little more
तो अगर 15,000 20,000 है आपका स्प्रॉकेट लाइफ, यू कैन गो अप टू 25 and 30. माई previous bikes Enfield's sprocket life was more than 40,000. I am not joking. It was more than 40,000. I had driven around 70,000. Around the 25,000, 30,000 mark was the first replacement, and then after that I never changed it. And my brother was bought his bike 2 years back at 18,000. His sprocket is being changed. So if you can take care of your sprocket, you can have a longer life out of it. Very simple. 50 rupees for the washing, 50 rupees for this bhaiya, 100 rupees, and maybe a few thousand kilometers more. From this angle, I think you have a better view of the sprocket being cover being now put back in place. So when you remove the sprocket cover, you will have to remove the clutch lever also along with it. That's something lying around on the ground. So please be careful, do not lose any of these nuts. When you remove it, try to put it back into the same groove from where it came. And as you can see, it's putting back the clutch lever. So ensure that the clutch lever is also put correctly. Keep the bike in neutral. Yeah, that's what he's doing now. Very important to find that neutral and put it in neutral. So these are those bike basics. I think every rider who goes for a very long ride, very long or what, even for a small ride, because when your sprocket will break in the middle of the ride, it can be a very, very annoying experience. One way to avoid it, keep doing this. Every fourth wash or fifth wash, you can get the cover removed and clean it from inside. Don't wait for the vehicle to go to the service center and them to do it. Mostly they are not going to do it. So be careful with the sprocket. It's a very important component. It's one of them. It's like the reed ki haddi. Don't get that haddi broken. चलिए, स्टिकरिंग का काम भी अभी ख़त्म हो गया. चलते हैं घर जाते जाते आने वाले वीडियोस के बारे में एक छोटा सा एक संकेत भी दे देता हूँ. The next video is going to be mostly about my preparations for the longer ride. क्या क्या लेके जाना होता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट होती है, वो सारी चीज़ों के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होगा वन वीडियो. और उसी वीडियो में शायद मैं मिक्स कर दूंगा हाउ टू डू योर प्लानिंग फॉर एन आयरन बट राइड, बिकॉज आयरन बट राइड इज़ नो जोक. ठीक है, स्पेशली इन आवर इंडियन कंडीशन इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट अ जोक. अमेरिका में अगर आप कर रहे हो तो सुबह उठ के मुँह धो के आप जाके कर भी सकते हो किसी नॉर्मल वेदर में, लेकिन इंडियन कंडीशन में जब रोड अच्छे नहीं होते हैं या होते भी हो तो ट्रैफिक बहुत होती है, गाय भैंस घुस जाती है. इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंजिंग थिंग टू राइड an iron butt. So if you are going to do an iron butt, I think you can use this video which I will be giving as a reference. उसको यूज़ कीजिए and उसके बाद I'm sure you can get enlightened with it. Please do keep supporting. Many much more of videos are to come this way, and I'll have a lot of trips planned entire year. So देखते हैं जहाँ जाएंगे, सब शूटिंग करेंगे, नए नए लोकेशंस आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ होता क्या है हर जगह पे जितना हो सकता है. आई विल इंट्रोड्यूस मोर ऑफ केरला टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यू नीड टू सी द ब्यूटी ऑफ केरला एज मच एज वी कैन. So that's my one big intention. So please stay tuned, remain steadfast in your support for this channel. I'll see you soon in the next video. Until then, goodbye.